जय हिंद। आई एम ग्रुप कैप्टन राजेश पांडे, योर एसएसबी मेंटोर। जैसे आपने मेरे पहले भी एपिसोड्स पॉडकास्ट देखे होंगे, एम इज टू मेक यू अवेयर अबाउट वेरियस ऑप्शंस where you can learn about the SSB, where you can get proper guidance about the SSB. So इसी एक सीरीज में मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ Commander Vikas Yadav, Indian Navy से, who has been a very experienced GTO in the Navy, and now he has, after getting relieved from the service, he has started a SSB guidance center. तो हम उन्हीं की जुबान से सुनेंगे इस सेंटर के बारे में. So let us welcome Commander Vikas Yadav. So hello, good evening, viewers. Today we have amongst us Commander Vikas Yadav, an experienced group testing officer from the Indian Navy. So ज़्यादा मैं बजाय उनके बारे में बताऊं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कमांडर विकास यादव से कि वो अपने बारे में बताएं. सो वेलकम कमांडर विकास. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. तो जैसा आप जानते हो कि भाई मैं इस चैनल में जो एक्सपीरियंस है उनको अवगत कराता हूँ अबाउट द पॉसिबिलिटीज वेयर दे कैन गेट गाइडेंस एंड थिंग्स दैट कैन हेल्प देम प्रिपेयर फॉर SSB. So may I request you to let the viewers know about your journey in the Indian Navy and then as an assessor. All yours. Thank you, sir. I started my career, sir, in Navy as a short service commission officer long back in 2000, January 2008, sir. Okay. I got commissioned in Jan 2008, served in Navy for 14 years. Initially, I opted for aviation. I was in aviation, sir. And thereafter, turned to surface Navy, where got an opportunity to serve on board, I think, every class of ships, be it destroyer, frigates, OPVs, strategic platforms, or maybe, aircraft carrier. So that was a very great journey, sir, because इसमें हर जगह जाने का मौका मिला. And then finally, I, landed up over the year into the assessment, when in 2016, I became a GTO. Mm-hmm. And since then, on and off initially, but then I posted in SSB Kolkata. When I posted as a commissioning senior GTO, because when I posted there, it was still not operational. We were not trying to make it operational, usko pura banana. So that way, as an assessor journey, it was very well. Though we call it, sir, SSB Kolkata, but it's in Diamond Harbour actually. It's almost 50 kilometers from Kolkata. Uska pura GTO ground, from designing to making. So बहुत सारी चीजों में I was involved, and in fact was the one who did it. तो उसके बारे में फिर मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो. After 1 year, when it got commissioned, it was a regular batches. Then I went to SS33 SSB Bhopal, where generally सिलेक्शन सेंटर में आप जब आप सेंटर में हो तो सभी में आर्मी नेवी दोनों के बोर्ड है, तो यू कीप डूइंग असेसमेंट इन बोथ द वे. Yes. Navy and Army. So it was again another experience in a different way. कोलकाता में क्या है कि as a task designing, task creation, उसका बहुत अच्छा था. But when you went to Bhopal, it is like continuous, assessment which were going through. Either आज या तो नेवी में या आर्मी में, मतलब कहीं ना कहीं है. तो वो उसमें then experience was great, sir. And when I retired, I thought initially I never thought I'm going to start some academy and all, because आप सर वही कर रहे हो पिछले 4-5 साल से. एवरी डे यू सी द कैंडिडेट एंड आल्सो देयर विल बी सम चेंज. आई जॉइंड एज ए आई इन अ कॉर्पोरेट, वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर. But then I realized, I met with Sumit. He came for some other, work to me कि ऐसे कुछ एक किसी प्लेटफॉर्म में हम दोनों एक साथ मिले थे. एंड देन वो एक अच्छा हुआ था ना कि पॉजिटिव वाइब्स. उसके बाद एक दो बार ऐसे मिले, एंड देन ही केम कि सर एक्चुअली आई टीच ऑन, he was teaching on a platform online उस टाइम पे when we met first time, and say कि ऐसे ऐसे, but now I want to open my own institute. ऐसे करें, best wishes यार. And then उसके बीच में भी वो inauguration में या वैसे कुछ he just called me to invite, he just invited me to motivate and tell candidates. So वहां पे गया, and then मतलब it was normal, तब तक कुछ नहीं था. but suddenly the one day he just came कि सर ऐसे ऐसे अभी I want to start for SSB, and can you be onboarded? Initially it was like, okay, ठीक है, let's see, because अभी तो I thought कि ठीक है, मतलब it's like सर आप नॉर्मल काम कर दो, वीक में 2 बार 3 बार जाके चले जाओ. बट वो है ना कि जो काम अच्छा लगता है सर, फिर उसी में बार बार आपको चीजें खींच के लेके आती हैं. सो असेसमेंट आई थिंक इतना घुस गया था ब्लड में इतने साल करते करते, तो व्हेन वी स्टार्ट डूइंग आई एंजॉयड इट.
Okay, this is a task which you're going to do now is called group planning exercise, right? In this task what actually happen, एक board होगा ऐसे, I mean this is a board. You can see यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा कलर यूज़ है? Yellow. ये डिपेक्ट करता है जनरल कंट्री साइड. जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, कार, बस, ट्रेन, you see outside window the color which is shown is reflected by the color yellow. Now you can see the thick black box within lies our area of interest. एंड इसमें एक एरो है, ऊपर से एन लिखा हुआ है, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन. यहाँ स्केल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ रहेगा 0 10. When result comes, I mean, so it gives a different feeling altogether कि यार आप मतलब you're able to change the life of a candidate. तो पहले Yes. assessment में it's a different thing because you are seeing only है तो है, नहीं तो नहीं है ना. You pass him, fail him. At times even you want to help candidate कि यार ये बच्चा अगर ऐसे करता तो शायद रिकमेंड हो सकता था, बट यू कांट डू एनीथिंग फॉर इट. राइट, Exactly. जैसे कि करता तो कर सकते थे. यार यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि अगर यार तुम्हें ये कमियां, आप ये सब काम कर सकते हो. एंड सर, इनफैक्ट बिगर चेंज केम व्हेन रिजल्ट केम. जब वो पहली बार हम गए थे, आई थिंक इस वक्त एनडीए 150 के लिए चला था. आई थिंक 150 ही था पहले. हाँ. सो जब रिजल्ट आया सर, उसमें बॉयज में एक जो एसएसबी में हाईएस्ट मार्क्स थे, दैट वाज ही आयुष कांत करके लड़का था. नाउ दे जॉइन academy. He was from here, जो second highest actually SSB में. He was also with us. Then you feel कि यार आप इतना कुछ change कर सकते हो. So that way कि yes. Then उसके बाद मतलब the team start also building up. Initially when it started, I mean, it was more of a like, you teach everything. Like I was, teaching Psych, I was teaching GTO, तो चलो वो तो अपना फोटे है. And then interview also I was conducting and also. I mean, but like if your batch were small and you can focus. और उसको हम उस टाइम पे मतलब I never took it as full time. Something like you are doing full time का आप I wanted to work in corporate. I was saying the hobby की ठीक है. Whenever you get time, just do it. Once, अच्छा. twice in a week or something. Okay. But जब रिजल्ट आया एंड देन इनफैक्ट आई स्टार्ट, आपको फील तो आने लगता है. देन आई थॉट कि सर अगर यहाँ मजा आ रहा है तो लेट्स नॉट, आई मीन, डाइवर्ट एट टू डिफरेंट प्लेसेस. लेट्स नॉट मेक इट ए हॉबी, मेक इट ए फुल फ्लेज. एंड वो दूसरे वाला हॉबी के उसमें रहने देते हैं. सो आई लेफ्ट कॉर्पोरेट, स्टार्ट वर्किंग ऑन टू दिस. उसके बाद तो सर टीम बढ़ते चला गया. अभी वी गॉट अ साइक, वी गॉट more GTO interim officer, sir. मतलब we met you as well. And देन तो सर नाउ यू सीन, उसके बाद तो मतलब रिजल्ट अलग ही है. एनडी 151 विच इज गोइंग ऑन दिस टाइम. एंड मतलब रिजल्ट वो है डिफरेंट लेवल ऑल टू. फिर उसमें मजा आने लगा. देन वी मतलब आई थॉट कि आई थिंक लेट्स डू समथिंग व्हिच वेयर यू कैन हेल्प सम कैंडिडेट, और यू कैन हेल्प सम इंडिविजुअल चेंज देयर एंटायर लाइफ, और मे बी हेल्प इन अचीविंग द करियर. आज की डेट में क्योंकि अभी बोलने में ये बहुत छोटा लग रहा है सर, बट after result someone comes and you see their journey now, so actually it impacts a lot. Yeah, you are But it very was all right. about me, sir, how it बहुत started. बिल्कुल सही बोल रहे हो. Because see, even after retirement, I took up some franchisee. I was into some kind of a training, which has nothing to do with the SSB and all those things. So that was a computer, hardware training, etc. So I was running that franchisee, though. I was interacting with the youth. Of course, they were from a different kind of a background and not really that, NDA material. I would say they were not interested in defense and all. तो लेकिन होता क्या था कि उस टाइम पे फिर लोग जानते थे मुझे कि भाई ये he is an assessor, been in DIPR, etc. So off and on, people used to keep coming to me for this guidance, and I found this was more satisfying than anything else. In fact, I was telling somebody, I was telling my son yesterday, I think, कि ऐसे बहन का यार मेरे को ना बड़ी थकान सी लग रही है, और थकान सी लग रही थी परसों. लेकिन मैंने मतलब क्या बोलते हैं, रिलक्टेंटली आई टुक अप वन क्लास, जिससे एक किसी बच्चे का इंटरव्यू करना था, आई थिंक, एंड इट दैट वर्क्स एज ए थेरेपी फॉर यू आल्सो. यस सर, एक्चुअली बैंगलोर सर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कोई काम आपको पसंद है ना, उसको करे तो काम नहीं लगता है. लाइक यू गो एग्जैक्टली. टू क्लास एंड यू फील्स लाइक यार, तो मतलब यू फील मोर एनर्जेटिक. पूरा एब्सोल्युटली. यंग बच्चे हैं, यू गेट टू नो अबाउट द थिंग, हाउ दे वर्क, क्या चल रहा है. नाउ एवरी टाइम द क्लास इज ओवर और मे बी some session is over, you feel like yes,
now you are कुछ एनर्जी ड्रिंक मिला है, now you are more वो. सो बिल्कुल सही तुम बोल रहे हो कि इस तरह का फीलिंग आती है, देन यू फील कि भाई ये जो आपका कॉर्पोरेट जॉब है या कुछ इस तरह का है, दैट इज वो बेमायने हो जाता है एकदम. सो So in fact, I'm sorry to cut, लेकिन corporate में भी क्या होता है कि people are aware कि I came from an assessment background and all. So people used to ask, अच्छा आप बताइए वो क्या सोच रहा होगा, what they doing it. I mean, they used to take it a different way. अच्छा आप बता एग्जैक्टली. सकते हो कि how this client is going to react after this. Are you able to just go ahead with this and all. So more of people used to come for all these kind of funny questions. एब्सोल्युटली नो. एंड सी द ब्यूटी इज जो हमारा असेसमेंट का जो टेक्निक है एसएसबी का, आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी असेसमेंट anywhere in the country, including the best of the Yes, corporate this thing, sir. or civil service ले लो आप, कुछ भी ले लो, nothing to beat this comprehensive system. I have been into Yes, psychometric tests and this and that, सब कुछ मैंने देखा हुआ है. बट इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम चेक करने का, असेस करने का पर्सनालिटी का कहीं नहीं है. सो पीपल डू ऑफ एंड ऑन, इवन इन माय अर्लियर what do you call franchisee, they used to be even the franchisee owner कि पांडे साहब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और ये वो करके ना, तो ये एक होता है. एंड आई पर्सनली फील कि see the kind of experience that you have got as an assessor, it can make a lot of difference to people's lives. yes, sir. तो जब मैं खुद आई यूज टू बी एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर इन वाराणसी, सो दैट इज द टाइम आई रियलाइज कि बच्चों को इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है कि उनको ठीक से मालूम ही नहीं है उनकी अपनी काबिलियत क्या है, वो क्या Yes, sir. कर सकते हैं. So, like you also mentioned कि जब हम एसएसबी में होते हैं तो वी फील कि यार इसको अगर ये थोड़ा सा कोई हिंट दे देता ना तो ये बच्चा पास हो Yes, sir. जाता. Yes, But you cannot do anything there. There you are not to yes, assist or guide a person. You are yes, there sir. to assess him. So after hanging your boots in the service or hanging your uniform, whatever you call it, I think this is one way जहाँ पे आप बहुत एक योगदान As आप in, दे like सकते giving हो, back to बहुत the important. society, sir. When what we get. Absolutely. Yes. No, it makes so much of a difference. And when you see, you have also seen recently, I think जो तुम्हारा सेंटर है LWS-SSB, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा मैं. So, the kind of success that you people have got is phenomenal. In a short span of time, I think the figures I can get from you only. But yes, the success has been phenomenal and in a very, very short span of time. So if you can, throw some light on ये तुम्हारा ये शुरू हुआ कैसे? Of course, सुमित से मेरी बात हुई है. सुमित had, I had known him from Unacademy days, and that time he did mention कि भाई वो ऐसा कुछ करना चाहता है. तो उस टाइम तो ऐसा कुछ आगे चला नहीं बात. But notwithstanding that, since you mentioned कि हाँ इस तरह की कुछ बात हुई थी, so सुमित से मेरी अलग बात हुई है जो where he said how he got into this. So like you said कि you had a very unique experience of setting up the board in Calcutta. Yes, sir. So that is something which, Sir, which actually, helps you that so much. yes, Designing yes, the whole or being a part of designing the whole ground, the setting up the SSB center, because I know the Kolkata was being it was a new center in those days, it was coming up. And तो किसी सेंटर को सेटअप करने में काफी कुछ लगता है, काफी प्लानिंग और उस चीज को समझना, पूरी टेक्निक को समझ के, और जीटी खास तौर से जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजाइनिंग द टास्क एंड ऑल, that is a very I would say complex exercise. It requires a lot of thinking, a lot of knowledge about the whole system as such. तो वो तुम्हें उसका एक एक्सपीरियंस रहा, एंड देयर आफ्टर भोपाल में you were there in Bhopal, na, right? yes, sir. So Bhopal में of course you would have tested the army candidates as well. Army and Navy के तो रहते ही हैं.
So this whole experience जो है तुम्हारा, I think that must have come very handy. तो ये यहाँ पे शुरू कैसे किया? Of course, I have been to your center. I do conduct interviews also, but how did you start this? Because this, if I am not wrong, this whole building, the setup was already existing as a school, if I'm not wrong, right? So Yes, can you exactly. just throw some light on this? Actually, sir, I'll just reply in two different ways. One is how we just came up the entire setup, and another thing is कि when you sir said ना, I mean कि एकदम इतना success मिला इस institutes को and all. So somehow how we thought about this strategy and how it came up. Just setting up like when Sumit met me first time, and generally when you meet people, I have been earlier so many candidates, so many other people who wanted to start, some of my friends also, they always start with the monetary benefit की ये हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं. And the first time I was seeing someone who wanted to see कि सर रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, मतलब ही इज ओनली वरीड अबाउट रिजल्ट, एंड जैसे करते हैं आई थिंक कि सो एक वो होता है ना, और मन से एक वो रहता है ना कि यार पढ़ाना है, कैसे करना है, तो समहाउ वो नियत इतना उस वे में गया कि सिर्फ उस रिजल्ट के बारे में भी डिस्कसिंग. इनफैक्ट इनिशियल फ्यू मंथ्स फिर ओनली डिस्कसिंग रिजल्ट कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, हाउ टू डू दिस. And moreover, sir, when I came to Bhopal, Bhopal, and I've been to Bangalore also. When I did my training, it was with Army Board, and I used to go to Bangalore on TDs, बीच में विशाखापट्टनम, बैंगलोर, भोपाल. सो सेंटर का फायदा क्या होता है कि आपके पास ना बहुत सारे असेसर्स, and you do the cross assessment. I mean, you go to Navy, and you go to Army. Army guys comes to Navy, and of course, so you realize over a period of a time, इतना डिस्कशन. and भोपाल में इतना अच्छा एक वो था कि मतलब एक कलेक्टिव एफर्ट जो होता है ना, और कलेक्टिव लर्निंग जो है, वो इट वाज सच स्ट्रॉन्ग कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. अरे यार ये ऐसे ये सोचता है, दिस मे बी द ह्यूमन वो, एंड एवरी ऑलमोस्ट अल्टरनेट डेज यू सिटिंग इन योर ओन कॉन्फ्रेंस ऑन बोर्ड, और मे बी समबडी एल्स कॉन्फ्रेंस जहाँ पे आप कर रहे हो. सो आई थॉट कि जब ये करना है ना, तो ये ऑल थ्री सर्विसेज से असेसर्स रखने हैं. मतलब एक तो असेसर्स होने चाहिए, आजकल डेट में बहुत सारे असेसर्स यहाँ पे नहीं है, और जो असेसर्स होंगे मतलब वो वाइड एक्सपीरियंस होता है ना, लाइक नाउ जैसा यू ऑलरेडी नो, लाइक एयरफोर्स के आप लोग, यू आर द इंटरिम ऑफिसर, देन वी हैव a psychologist from army, I am from GTO, I mean I'm from Navy, some other GTO also from army. So एक वो जो mix and match है ना, वो it's always give wider area of experience, because Yes, and yes. what your experience in Dehradun, maybe something different from the DIPR, but you learn when you interact with so many scientists, other people. Same goes to somebody, being only into naval board and all. You generally keep discussing about what required in naval officer and all. Those standardization are in place, but somehow you just tend to be fixated to the one kind of a services. But when it comes from all three services and you keep going, so you realize एक तो ये बहुत फायदा मिला. I think somehow ये by luck भी हो गया थोड़ा सा, and then वो दिमाग में सर हमेशा से ही था when I worked in Bhopal and Bangalore कि I think every time it's always better कि assessor should be from all three services, क्योंकि इतना Absolutely. wide range of वो हो Yes. सकता है. Process of the SSB or the testing or the knowledge part, it is Sir. that environment. So they only talk about SSB or maybe different topics. Eat, drink, and breathe SSB only. SSB only. 24/7.